Good morning. अच्छा किसी को कोई problem कल की lesson में it was easy and it did not need much explanation. Most of the information is very self-explanatory. कोई question जो उससे related पूछना हो, you are free to question. ये तो लगता है सिर्फ 8th A और 8th C ले रही है आज क्लास मेरे साथ हैं. Yes, there's nobody from 8th B. 8th B वाले कहते हैं छोड़ो क्या लेना. Oh, Atika Kashif is here. ठीक है, अच्छा. Any questions regarding the lesson? I think it was very easy and very self-explanatory. कुछ पूछना है, I am free to, I am open to questions. Sorry, I had to go someplace yesterday. I had a visit with the doctor, due to which I couldn't conduct the class live. ठीक है, कुछ पूछना है related to the lesson. बच्चे पूछते ही नहीं है भाई, बच्चे कहते हैं हमें सब आता है. Okay, we have, including me, 14 participants. Okie dokie. Chale. For any question, you can raise your hand and ask the question. I'll unmute you. ठीक है, अच्छा. फटाफट पहला क्वेश्चन का आंसर लिख लिया होगा, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है. I'll post everything on what you call it, Google Classroom. ठीक है. चलें. Question 1 is, how do you define noise pollution? Noise pollution can be described as an unwanted sound that fairly intrudes into our daily activities. If left unchecked, this sort of noise can lead to mental stress and hearing loss, and can also interfere with daily activities such as doing homework, watching television, and talking on the telephone and sleeping. Okay? Remember, the question is still being answered because there might be certain, see, as you've seen from the policy guideline, one question from your comprehension passage will be worth 6 marks, which is your summary, 5 marks for the summary and 1 mark for the title. And then you have, related to the text, you have 4 more questions to attempt, each question carrying 3 marks. So I will still be doing the question answers with you, but keeping in mind that we are taking it as, बिल्कुल जैसे हम पहले छोटे होते करते थे कि हम comprehension का answer खुद देखते होते थे, ठीक है? उसी तरह से we'll be doing it now. But if you can see this question, the answer that I have jotted down over here, it looks like it's worth 3 marks, ठीक है? All the content has been covered and it looks like it is 3 marks. Acha, yes, please. Question number 2. How is transport a source of noise pollution? Students, I would like you to answer the question this time. Raise of hands, please. Take some time to think and then raise your hands, please. How is transport a source of noise pollution? Think a little and then give me a show of hands. Afifa, Serena, Fatma Noman, Hassan Shahzad, Abdul Muhaymin. I would like you guys to give me an answer. Yes. अच्छा, बेशक exact या perfect answer ना दें, कुछ भी बताएं मुझे कि how come transport is a source of noise pollution? Yes, Amna. Ma'am, traffic noise such as like horns and loud horns, they can disturb us. Bus. Very good. And
Somebody else would like to add to it? What happens जब हम 14 अगस्त पे 14 अगस्त हम किस तरह मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे? क्या करते हैं लोग ज्यादातर? They're blaring horns और अपना जो मोटर बाइक होता है उसके साइलेंसर्स के साथ क्या करते हैं? उसके साइलेंसर का क्या मतलब है कि आवाज को साइलेंस करे वो, ठीक है? उसके साइलेंसर रिमूव करवा देते हैं या उसके अंदर कोई ऐसा उसका मैकेनिज्म को इस तरह से छेड़ते हैं लोग कि उसके जो साइलेंस करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता है एंड देयर इज अ वेरी हॉरेबल साउंड that comes out of motorbikes, बिल्कुल जिस तरह वो पुराने रिक्शों में से आती होती थी, पड़े 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 वाली आवाजें। ठीक है? तो does that feel good to the ears? Yes? No, ma'am. No, ना? अच्छा, नॉर्मली भी आप देखो घर के पास से अगर कोई ट्रैक्टर ट्रॉली गुजरे या ट्रक गुजरे या लाउड म्यूजिक लगा के कोई गाड़ी गुजरे या ऐसी गाड़ी गुजरे पास से जिसका इंजन की बहुत ज्यादा आवाज आती हो, तो डज इट साउंड प्लेजेंट? चैट में ही बता दो कोई यस नो आंसर। No. Very No, ma'am. no, ma'am. Very good, Fatma. Fatma also says the noise of the horns. So noise producing vehicles and sounds of horns make transport a source of noise pollution. Vehicles on roads, railway tracks क्या होते हैं मैम? मैम को अंग्रेजी भी नहीं लिखनी आती. And in the air are constantly adding noise with jarring effects to our surroundings, and people always struggle to cope with them. ठीक है? आमना बेटा टेंशन नहीं लेनी. Everything will be posted. ठीक है? मैम बस इसलिए करें क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं होता ना. ठीक है, no problem, no problem. वरना स्क्रीनशॉट ले लें. कितनी मैं स्मार्ट हूं ना? मैं तो हर चीज की स्क्रीनशॉट लेती हूँ. मैम मैं ले चुकी हूँ. चलो गुड हो गया ठीक है. अच्छा, रिमेम्बर स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चन में ना आपके जो क्या कहते हैं उनको एक होते हैं ना कंटेंट पॉइंट्स, एक होता है पता नहीं क्या कंटेंट वोकैबुलरी या कंटेंट वर्ड्स कहते हैं, वो होना जरूरी है. ठीक है? लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन यू हैव नॉइज प्रोड्यूसिंग व्हीकल्स, साउंड ऑफ हॉर्न्स. ठीक है? अब और फिर ये आप ऐड करोगे कि कौन कौन सी जगहों से आती है. And look at the use of this phrase, jarring effects. Oh, jarring effects. ठीक है? People always struggle to cope. ठीक है? ये कुछ statements या कुछ phrases ऐसे होते हैं कि वो अगर आपके question में होंगे ना, automatically you will gain your marks. ठीक है? You will gain marks in the answer. Oh, मैम एक तो जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. हाउ इज कंस्ट्रक्शन वर्क अ कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन? यस, बिल्कुल जिस तरह फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन यू गाइज थॉट ऑन योर ओन. थोड़ा सा खुद सोचें, थोड़ा सा टेक्स्ट में से देखें क्या बताया था टेक्स्ट में. Ma'am, in some places people use drilling machine and sound is not very good to hear. What is a specific word that has been used with the word beginning with the letter P? There's a specific word used in the text beginning with the letter P. You did this word in grade 6 as well. What do you get in your ears over here? जिसमें हम फिर earrings पहनते हैं. Piercing. So sounds can be piercing as well. ठीक है? Piercing meaning very loud and very shrill. ठीक है? So construction work जब हो रहा होता है तो क्या होता है? There's a lot of drilling going on. The sounds that are produced over there are quite piercing, and such sounds are obviously very irritating
they seem like a nuisance, okay? And they add to the frustration or mental fatigue of the people. Construction activities take place every day. Now, why do we need them? Because we need more buildings, bridges, and roads to accommodate more and more people, and also to reduce traffic congestion. The down point is that these construction equipment are too noisy. The sounds of drilling, Allahu Akbar, कुछ भी लिख देती हूँ मैं तो. Drilling and boring. At construction sites can cause noise pollution. देखो मुझे कोई देख के बता दो ये क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट में. The sounds of drilling and boring? Boring as in bore. मैम वो जो पानी के लिए लोग बोरिंग करवाते हैं. बोरिंग करवाते हैं, बिल्कुल ठीक है. वेरी बोरिंग. ठीक है ना. अच्छा, फिर भी एक दफा टेक्स्ट में से देख के बता दें, इज सच अ वर्ड यूज, या इसका कोई ऑल्टरनेटिव वर्ड जो टेक्स्ट में यूज हुआ हो? सिर्फ लिखा है ग्रिलिंग एंड पियर्सिंग. ड्रिलिंग नहीं है, लिखा है ग्रिलिंग. तो मैंने ठीक लिखा था ना, ग्रिलिंग एंड पियर्सिंग. The sounds of grilling and piercing at construction site. The grilling and piercing. हम इसको मैम ये साथ में लिखा हुआ है is a big source of noise pollution. Grilling and piercing sound is a big source of noise pollution. Piercing sounds at construction sites cause noise pollution. ठीक है, अब ये स्टेटमेंट ठीक हो गई है ज्यादा. ठीक हो गया ना? Grilling and piercing sounds. Okay. How is use of technology causing noise pollution? जवाब दे दें सारे बच्चे. तो हम मैम. जी बेटा. Ma'am, for example, loud noise on TV. And Mobile phones. very good. Or loud music. Again, I'll refer to how we celebrate our Independence Days. क्या करते हैं हम? गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और दिल दिल पाकिस्तान ऊंची ऊंची आवाज में लगा के बैठ जाते हैं. The loud music. Loud music, loud volumes, listening to television and music on loud volumes, and excessive use of cell phones or mobile phones. उसके अलावा घर में अम्मी क्या पकाती हैं? जिस वक्त अम्मी खाने बना रही होती हैं तो पूरे घर को पता चल रहा होता है कि अम्मी खाना पका रही हैं. हैं? पका रही है अम्मी अभी? Yes, ma'am. आज क्या बना रही है अम्मी? जुम्मे का दिन है. मैम अभी नहीं शुरू हुआ. हाँ, अभी तो अम्मी खुद बेचारी बैठी हुई लेसन्स ले रही होंगी आमना की, है ना? Yes, ma'am. Your mom, she even uses a lot of technology in her kitchen. Technology in the sense कि अम्मी सेल फोन तो यूज नहीं कर रही होंगी खाना पकाने में, लेकिन अम्मी ब्लेंडर्स यूज करती हैं, ठीक है, ग्राइंडर्स यूज होते हैं, which cause obviously a lot of noise. Other than that, listening to television and music on a loud volume also adds to the noise pollution around us. Oh, बीच में तो इतना लंबा गैप आ गया. हम इसको नीचे ले जाते हैं. अच्छा जी. So we are surrounded by gadgets and we use them extensively in our daily life. Gadgets like television, music player, cell phone, cooler, air conditioner, generator, and other such equipment of technology cause noise pollution, which affect the quality of life. Okay, now why is noise dangerous for human health? We have a total of 6 questions or 5? 6. 6. क्योंकि मैंने फिर वो जो इन Ma'am. जी बेटा. Ma'am, it can result in hearing problem. And
मैम कुछ लोग ना बहुत ज्यादा ऊंची आवाज से ना डर जाते हैं ना, तो लाइक हाई ब्लड प्रेशर है, लाइक हाई हार्ट रेट और ऐसे भी हो High सकता heart है. rate, very good. ठीक है. High stress levels. Stress levels, very good. What about things related to your psyche or your brain? गुस्साता है लोगों को उनका symptom. Ma'am, loud noises can be triggering for some people. Very good, Karina. Very good. Triggering in the sense that they cause aggression. आपको गुस्सा दिलाती हैं, aggression create करती हैं. What else? 5 हो गए. और क्या करती हैं? मैम एंजाइटी भी हो सकती है किसी को. Anxiety हो जाती है, बिल्कुल. Anxiety, depression होता है. जी बेटा. Sleep disturbance. Very good. Sleeplessness होती है, insomnia, sleeplessness, fatigue, ये सारे factors होते हैं. Very good. Okay, noise leaves hazardous impact on human health, where hazardous means dangerous. ठीक है? Noise leaves hazardous impact on human health. It causes restlessness, hypertension, increased heartbeat, stress, reduced psychological well-being, hearing loss, aggression, depression, sleeplessness, and fatigue. Fatigue, thakan ko kehte hain, theek hai? These in turn can cause more severe and chronic health issues later in life. Okay, now what kind of precautions may reduce noise coming from electronic devices? हाँ, क्या कर सकते हैं हम कि electronic devices में से आवाज कम हो जाए? तो हम लोग सिंपली वॉल्यूमाइज से ही कर सकते हैं. Very good. साउंड बैरियर्स यूज कर सकते हैं. Very good. Ma'am, using AirPods. Very good. Very good. We can lower down the volume. We can use sound barriers. We can use AirPods. What else? मैम सिनेमाज में ना वो लोग कारपेट और ना पर्दे इसलिए लगाते हैं ना ताकि बाहर आवाज ना जाए. Very good. That is हम लोग basically a like sound जगह में barrier. बैठते Very good, Amna. Very good. And should steps be taken on the government level? Ma'am, some Ma'am, bikes damage should be stopped. Again, Nafis. And the use. Okay. Some damaged bikes should be stopped. Very good. Okay. Ma'am, the use of mobile phones should be prohibited in schools and offices. Very good. Very good. And what about residential areas? उधर क्या करना चाहिए? कुछ steps लेने चाहिए? Loudspeaker और ये जो electricity generators होते हैं, इनके लिए कोई rules होने चाहिए? मैम कहने लाइक रात को ना लगाएं और लाइक वर्किंग आवर्स में ना लगाएं मैम. बिल्कुल ये हो ठीक है. सकता है. अगर आप नोट करो तो इस्लामाबाद में और बाकी सिटीज में एक बहुत मेजर डिफरेंस है. ठीक है? एक ये कि इस्लामाबाद में इतना शोर नहीं है. लोग इस्लामाबाद को एक बोरिंग सिटी कहते हैं. रीजन बीइंग कि वहां पे शोर नहीं है. ठीक है? क्यों इस्लामाबाद में शोर नहीं है? Do you think the government has implicated some rule over there? The reason why Islamabad में इतना loud traffic का भी और वैसे भी शोर नहीं है, reason being that the government has implemented strict rules over there. ठीक है? आप बाकी सिटीज में देखो, आप कराची चले जाओ, आप लाहौर चले जाओ, अगर आपकी गाड़ी धुआं दे रही है, आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा. ठीक है? आप शोर मचा रहे हैं, आप हॉर्न देते जा रहे हैं, आपको कभी कोई कुछ नहीं कहेगा. ऑन द अदर हैंड इस्लामाबाद में अगर आपकी गाड़ी जो है उसमें से डीजल का धुआं निकल रहा है, आपकी गाड़ी का चालान हो जाता है. ठीक है? ड्राइवर का चालान कर दिया जाता है और चालान फिर अच्छा खासा होता है. 500 या पता नहीं कितना उसके ऊपर चालान लगता होता है. ठीक है? जब गवर्नमेंट लेवल पर, अच्छा, और फिर एक और चीज देखो, जब बहरिया टाउन शुरू में बना था
तो एक बहुत यानी मैं सिली सी एग्जांपल देने लगी हूँ, लेकिन रूल्स इम्प्लीकेट करने का मैं आपको समझाने लगी हूँ कॉन्सेप्ट. Bahria Town was the only community all over Pakistan जहाँ पे ये घर के बाहर दीवारों के ऊपर और जो आपकी बैल्कनीज हैं वहां पर कपड़े लटका के सुखाना मना था, और मेरे ख्याल है अभी भी मना है. Am I right, Bahria Town residents? Yes, ma'am, मना है है ना? Yes, ma'am. और जो लोग इस तरह से करते हैं उनको बहरिया की जो सिक्योरिटी या जो उनके इंचार्ज हैं वो लोग आके हेफ्टी फाइन्स करते हैं. Isn't it so? The same goes for noise. अगर गवर्नमेंट लेवल पर ये स्टेप्स लिए जाएं कि जो लोग शोर मचाते हैं, जो नॉइज क्रिएट करते हैं, उनको जुर्माने हों, उनको फाइन्स लगें, तो नॉइज पोल्यूशन जो है इट कैन बी कंट्रोल्ड. ठीक है. स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू जनरेटर्स, जनरेटर की ठीक है आवाज होती है, लेकिन आप अगर उसकी प्रॉपर ऑयलिंग वगैरह करें, उसको ग्रीस वगैरह करें, तो फिर इट्स नॉट सपोज टू प्रोड्यूस एज मच noise that it does. ठीक है. So the answer is listening to loud music or watching TV on a loud volume should be strictly prohibited. Excessive use of electricity generators and loudspeakers in residential areas should also be discouraged. अच्छा, इस reference में अगर आप नोट करो तो पहले क्या होता था, आप मस्जिदों की बात अब मैं करूंगी. मस्जिदों में क्या होता था पहले, हर वक्त बस जो अजानें शुरू हो रही होती थी, अगर अजान का टाइम 1 बजे है तो 12:30 या 1:45 बजे से मौलवी जो है वो अजानें देना शुरू करते थे, और 1:30 बजे तक 1:45 बजे तक अजानें चलती रहती थी. कभी एक मस्जिद से आ रही आवाज, कभी दूसरी से आ रही है. फिर उसके अलावा बिला वजह के ना क्या कहते हैं, ऊंची ऊंची आवाज में बेढंगे सुरों में नातें पड़ी जा रही होती थी. गवर्नमेंट टुक एन एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन. ये लाउड स्पीकर एक्ट निकला था तकरीबन कोई 4 या 5 साल पहले. ठीक है. जिसके बाद मस्जिदों से गैर जरूरी ऐलानात करने में और लाउड स्पीकर का बेजा इस्तेमाल जो होता है, बड़ी सगील उर्दू इस्तेमाल कर रही हूँ, इस्तेमाल करने से गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया, और जो मुअज्जिन इसको नहीं फॉलो करते थे उनको फाइन किया. जब फाइन्स लगे गवर्नमेंट लेवल पर, तो अब आप नोट करें, आज अभी ये और थोड़ी देर बाद आप नोट करना, जुम्मे की नमाज के अलावा आप नोट करो, जुम्मे का भी अब खुतबा आपको उस तरह से नहीं सुनाई देता जो जिस तरह पहले सुनाई देता था. अब आप सिर्फ अजानें सुनोगे. ठीक है. या 12 रबीउल अव्वल जब करीब आ रही होती है तब आप थोड़ा बहुत कोई नाते सुनते हो, लेकिन उसके अलावा एक्सेसिव यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स इन द मॉस्क इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड. ठीक है. तो इस तरह से डिस्करेज कर सकती है हुकूमत. The government should frame rules in this regard and strictly enforce them to reduce noise pollution. ठीक है. जब गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी तो ऑटोमेटिकली चीजें ठीक होती जाती हैं. अब आप खुद अपने स्कूल में देखो, अगर स्कूल में कोई बच्चा ऊंचा ऊंचा बोले, ठीक है, और टीचर्स भी ऊंचा ऊंचा बोले, तो क्या होता है, सारे तंग होते हैं. देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो डर जाते हैं टीचर की ऊंची आवाज से भी. ठीक है ना. तो क्या होता है उस कॉन्टेक्स्ट में, हमें फिर हमारी कोऑर्डिनेटर्स कहती हैं और आपको हम टीचर्स कहते हैं कि बेटा अपनी आवाज हल्की रखें. क्योंकि जब नॉइज लेवल हाई हो जाता है आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते. ठीक है. आपके अंदर एंजाइटी बिल्डअप होती जाती है. ठीक है. अच्छा, 6 क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड. इसके बाद क्या है कि जो आपके इन क्वेश्चंस है ना, या इन कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं, मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. ठीक है. क्योंकि हम कल लाइव लेसन नहीं कंडक्ट कर सके, इसलिए हम ये डिस्कशन इन क्वेश्चंस के ऊपर नहीं कर सके. इसलिए फॉर योर ईज आई हैव ऑलरेडी एडेड दीज टू द टेक्स्ट. ये तकरीबन को 3 सवाल है, 1, 2 and 3. ठीक है ना. इन 3 क्वेश्चंस को नोटबुक में करना जरूरी नहीं है, लेकिन आपके पास ये टेक्स्ट आ गया है तो इनको जब आप whenever you will be tested, इनको प्रिपेयर जरूर कर लेना. ठीक है. क्योंकि अब जिस तरह वही बात आ गई, SLO बेस्ड आ जाएगा, तो मैं कहीं से भी आपको पैसेज दे दूंगी आपके टेक्स्ट में से भी, और उसमें से फिर क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस आ जाएंगे. तो मे बी वन ऑफ दीज क्वेश्चंस वुड बी देयर. ठीक हो गया. चलो, with that 11:30 हो गए. We come to the end of our lesson. The lesson will be posted on Google Classroom. इंशाल्लाह. कोई सवाल पूछना है बच्चों ने?
बाकी इंशाल्लाह मंडे से वी विल रिज्यूम आवर फेस टू फेस क्लासेस. बाकी फिर उधर कर लेंगे. इधर एटलीस्ट हमारे क्वेश्चन आंसर्स कवर हो गए. ठीक है, एनी क्वेश्चंस? चैट में किसी ने कुछ कहा है? वेरी गुड अयान अली, वेरी गुड नूरुलैन. एक्सक्यूज मी मैम. जी बेटा. मैम जो आपने अभी एग्जांपल दी थी वो कपड़ों वाली, मैम वो रिलेटेड तो नहीं है ना इस चैप्टर में से? नहीं 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 नहीं, मैं रूल्स के इम्प्लीमेंट करने की बात कर रही थी कि गवर्नमेंट या कोई भी लेकिन ये क्यों करते हैं? से. हाँ सॉरी, ये क्यों करते हैं ऐसे, लाइक ये वाली स्पेशल रूल क्यों है? ये इसलिए बेटा देखो, बुरा लगता है ना देखने में कि घरों के बाहर रंग बिरंगी कपड़े लटक रहे हैं. Yes. देखने में इट लुक्स अनप्लेजेंट. ठीक है, आप बाहर के मुल्कों में भी जाओ, आप कोरिया को देख लो, आप अमेरिका को देख लो. हम हर चीज में हम करते हैं ना कि जी अमेरिका में तो ऐसे नहीं होता, वेस्ट में तो ऐसे नहीं होता. तो व्हाई कांट वी अडॉप्ट सम गुड आउट ऑफ देम. ठीक है, Yes. अगर किसी के अंदर कोई अच्छाई है तो हम वो अच्छाई, अब हम वैसे तो हम कहते हैं जी फॉरेनर्स जो है वो अच्छे नहीं होते, ये नहीं अच्छा होता उनका, वो नहीं अच्छा होता, लेकिन फिर कुछ चीजों में हम कहते हैं कि देखो उनकी बहुत सारी चीजें अच्छी भी तो हैं, हम उनकी अच्छी चीजें क्यों ना अडॉप्ट करें. और फिर वही बात आ जाती है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इस तरह की यानी बुरा लगता है ना, देखो कुछ चीजें आपकी अनोइंग लगती हैं. यस मैम, समझ आ गई. बस इसलिए होना है घर के बाहर. और फिर ये कि एक होते हैं ना लोगों में थोड़ा तरीका सरीका होता है, अच्छे तरीके से कपड़े लटकाते हैं तो वो फिर देखने में प्लेजेंट भी लगता है. लेकिन वो ऐसे धज्जियों की तरह जो डाल देते हैं मैम को चुप करने दो, ठीक है, चीजें अभी भी रिकॉर्ड हो रही है. रिकॉर्डिंग बंद करो, रिकॉर्डिंग बंद. मैम क्रॉप